Good morning, students. We are proceeding with the same chapter, chapter 13, the Mauryan Dynasty. Today, we are going to talk about art and architecture of Mauryan Dynasty. At that time, five types of architectural monuments were prevalent: palaces, stupas, caves, pillars, rock adducts. स्टूपास क्या होते हैं? बुद्धिस्ट टेम्पल को स्टूपास बोलते हैं. I think rest of the things you know very well. We have already discussed in the previous chapters. The stupas are the Buddhist temples. ये एक spiritual monument है, means धार्मिक monument है ये. तो इसके ऊपर एक डोम होता है. डोम मीन्स एक गुंबद जैसा होता है बना हुआ. एंड रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह इसकी दीवारों पे लिखा होता है. In spite of those, the palace of Ashoka was very beautiful, extremely beautiful. Even the Chinese traveler Fa Hin astonished to see this palace, and he even imagined that this palace is not made by men; it is created by God. This is the stupa of Sanchi. This is the best example of the architecture of that period. Instead of all these, Mauryan rulers dug many caves for the monks to live in. Monks are the religious persons. They used to live in caves. Barabar and Nagarjuna caves were very famous at that time. We can see the finest example of architecture of that period in the form of stone pillars with shining surface. Pillars होते थे तब के टाइम पे एंड उनका सरफेस जो था बहुत शाइनिंग वाला होता था. एंड दीज पिलर्स वर क्राउंड विद एनिमल फिगर्स एंड धर्म चक्र. At the top you may see the figure of animal, and these stone pillars had four lines, and those four lines represented every direction: north, south, east and west. And this dharm chakra is now adopted as Indian national emblem. And this Ashoka's pillar can also be seen in many of the cities in our India, like in Sarnath and Delhi, Firozshah Kotla, Ambala, Allahabad. In many cities we can see Ashoka's pillars. While Ashoka was busy in spreading the message of Buddhism in neighboring countries, at that time Chinese emperor were started making their great wall, which is called Great Wall of China, to protect their country from the outer attacks. This was the little information about the art and architecture of Mauryan Empire. Now let's see how the Mauryan Empire came to an end. Means decline of Mauryan Empire. The decline of Mauryan Empire begins when Ashoka died in 232 BC after the reign of 40 years. 40 साल राज करने के बाद जब अशोका की डेथ हुई, उसके बाद मौर्यन एम्पायर काफ़ी वीक हो गया एंड उसकी जो पावर थी इट वाज नॉट एज मच एज ड्यूरिंग द अशोका टाइम. कोई भी राजा अशोका के जैसा पावरफुल नहीं था. उसके बाद मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन होने के ये भी कारण है कि अशोका ने प्लेज ली थी एंड ही ऑल्सो टोल्ड हिज सन्स एंड ग्रैंडसन्स नॉट टू रिजॉर्ट एनी वॉर. तो वॉर ना करने के कारण दे हैवंट गॉट एनी न्यू टेरिटरी, तो वो भी उसके डिक्लाइन का एक कारण था. मौर्यन डायनेस्टी का लास्ट रूलर बृहदीरथ था. ही वॉज किल्ड बाय हिज ओन कमांडर इन चीफ. उसके खुद के कमांडर इन चीफ जिसका नेम पुष्यमित्रा शुंगा था, ही किल्ड बृहदीरथा एंड ही एस्टैब्लिश्ड द शुंगा डायनेस्टी. पुष्यमित्रा शुंगा ने अपनी शुंगा डायनेस्टी इस्टेब्लिश की बृहदीरथा को मारने के बाद. तो रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी देवाभूति वॉज किल्ड बाय वासुदेवा. तो उसके बाद शुंगा डायनेस्टी का जो रूलर था देवाभूति, पुष्यमित्रा शुंगा के बाद जो देवाभूति उसका राजा बना था, उसको किसने मारा? वासुदेवा ने. एंड वासुदेवा ने आगे कौन सी डायनेस्टी इस्टेब्लिश की?
Kanva dynasty in 72 BCE. So we can say Mauryan dynasty was totally finished after the death of Bridirath. जब बृहद्रथ की डेथ हुई, जिसको पुष्यमित्रा शुंगा ने मारा था, तो उसके बाद ही मौर्यन डायनेस्टी फिनिश हो गई एंड शुंगा डायनेस्टी स्टार्ट हो गई. शुंगा डायनेस्टी के बाद कन्वा डायनेस्टी was begun. So this was all about the Mauryan dynasty. I think you have got it. Thank you. Have a good day.